Good morning, students, and welcome in today's lecture. Today we will start our next lesson, climate. In last lesson, you saw physiography and drainage system of both countries, Brazil and India. And again I am telling you that the whole textbook is about the comparative study of Brazil and India. What are the similarities and what are the differences? क्या similarities है और क्या differences है आपको दोनों कंट्री में देखने हैं. फिजियोग्राफ मैटर्स करता है वाटर ड्रेनेज सिस्टम को, और ड्रेनेज सिस्टम से ही क्लाइमेट इफेक्ट होता है. सो फर्स्ट लेसन इज द कंटिन्यूशन ऑफ सेकंड लेसन इज द कंटिन्यूशन ऑफ थर्ड लेसन. ऐसे ही है. तो एक लेसन नहीं समझ में आया तो आपको बाकी का नहीं समझ में आता है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हेन यू आर स्टडिंग दिस लेसन फोर्थ क्लाइमेट, एट दैट टाइम ओपन योर टेक्स्ट बुक. फर्स्ट वी विल सी इंट्रोडक्शन. इसमें जो क्वेश्चन आंसर है ना, उसके आंसर आप टेक्स्ट बुक में ही लिखना है. हाँ, देखो ऐसे मेक फ्रेंड्स विथ, क्योंकि ये मैप रीडिंग में आता है. पेपर पैटर्न में आपको पता है क्या, मैप फिलअप भी होता है और मैप रीडिंग भी होता है. आपको ब्राज़ील या इंडिया का मैप आपको आएगा ही. अगर ब्राज़ील का मैप आपको क्वेश्चन आंसर के लिए आता है तो इंडिया का मैप आपको मैप फिलअप में आएगा. तो ये जो क्वेश्चन है ना आगे से, ये क्वेश्चन के आंसर आप टेक्स्ट बुक पे ही लिखो. अगर आपने टेक्स्ट बुक नहीं लिया होगा तो ये क्वेश्चन के आंसर आपने आपके क्लास वर्क में ही लिखना है. इसलिए मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं 5 मार्क्स के लिए. अभी देखो ये क्वेश्चन, कंसिडरिंग द आइसोथेरम, ये लाइन से आइसोथेरम क्या ज्वाइन करता है आपको, सेम टेम्परेचर. आइसोथेरम सेम टेम्परेचर ये करता है, शो करता है मैप में. तो ये इंट्रोडक्शन है. मेक फ्रेंड्स विद मैप्स. तो पहले ब्राज़ील का मैप देखना है आपने. देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में ही है, ये मैप के नीचे. कंसिडरिंग द आइसोथेरम ऑफ ब्राज़ील, व्हाट इज द एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर इन ब्राज़ील. एवरेज रेनफॉल टेम्परेचर ब्राज़ील का कितना है, 18 डिग्री सेल्सियस टू 28, यानी मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर. ये आंसर है इसका. इन विच एरिया डज इट रेन मोर, कौन से एरिया में ज़्यादा पानी है. इट रेन्स मोर इन अमेजॉन रिवर बेसिन. ये आपको मैंने पिछले लेसन में बताया. फ्रॉम विच डायरेक्शन आर विंड्स फ्लोइंग टूवर्ड्स ब्राज़ील, ये देखो डायरेक्शन मैप में है. विंड्स फ्लो टूवर्ड्स ब्राज़ील फ्रॉम साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ट्रेड विंड्स. व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड दैट. द रीज़न बिहाइंड साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट विंड्स आर एज फॉलो. ये रीज़न है तो ब्रॉड क्वेश्चन है, लिखना है. द इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील. देन द लो प्रेशर बेल्ट इज फॉर्म near the low pressure belt is from southern and northern hemisphere. अभी देखो लो प्रेशर बेल्ट क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर इक्वेटर पे हाई है. अभी आपको 6-7 स्टैंडर्ड में अब तक जो आपने पढ़ा है ज्योग्राफी का, ये आपको अभी यहाँ पे काम में आएगा. कि आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है तो वहाँ पे प्रेशर बेल्ट लो होता है. और टॉरिड जोन जो है 0 डिग्री से 5 नॉर्थ, 0 डिग्री से 5 साउथ, तो यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट है. तो ये रीज़न है ये विंड्स का. और इनको जैसे इंडिया को मानसून रीजन से विंड्स से पता है बारिश, तो यहाँ पे ट्रेड विंड्स. एज इट इफेक्ट द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द ब्राज़ील हैव द सिमिलर इन द साउदर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स फ्लो. नॉर्दर्न में नॉर्थ ईस्ट एंड साउदर्न में साउथ ईस्ट. देन व्हाट कुड बी द ऑब्स्ट्रक्शन इन द वे ऑफ दिस. आपको पता है ग्रेट एस्कार्पमेंट एंड ब्राज़ीलियन हाईलैंड, क्योंकि ये सी लेवल से ऊपर है इसलिए. विच टाइप ऑफ रेनफॉल विल ऑकर बिकॉज ऑफ दिस विंड्स. ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो आपको पता है ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ग्रेट एस्कार्पमेंट एंड ब्राज़ील ओरोग्राफिक रेनफॉल. ये आपने पिछले साल देखा है कि ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड ओरोग्राफिक रेन टाइप रेनफॉल ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है. कन्वेक्शनल रेनफॉल जो लैंड पे होता है, और साइक्लोनिक रेनफॉल टाइप्स ऑफ रेनफॉल प्रेसिपिटेशन पॉइंट में आपने देखा है. तो यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल. कोरिलेशन दिस विंड्स एंड रेनफॉल. विंड्स एंड रेनफॉल का क्या रिलेशन है ये हमको पता है, इसी का इफेक्ट होता है. द ग्रेट एस्कार्पमेंट एंड द ब्राज़ीलियन हाईलैंड ऑब्स्ट्रक्ट्स द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स
As its effect, these winds move upward along the slopes of the Great Escarpment. These winds Great Escarpment की तरफ जाते हैं and the Brazilian highland. At higher altitude, the and windward side receives more rainfall. जो ऊपर है वहाँ पे पानी ज़्यादा आता है ग्रेट एस्कारपमेंट एंड हाईलैंड पे, और अपोजिट साइड पे रेन शेडो एरिया होता है. द रेन शेडो रीजन इज फाउंड टू द opposite side of Brazilian highland and escarpment. Next question, in each part of Brazil are the average temperature low? The average temperature are low in Paraguay Paraná river basin. Identify the rain shadow area in Brazil. Describe its climate characteristic. रेन शेडो एरिया आपको दिखाना है तो यहाँ पे ये देखो रेन शेडो एरिया. द रेन शेडो रीजन इज फाउंड टू द नॉर्थ ईस्ट एंड of the Brazilian highland. It receives only 0 millimeter to 500 millimeter average rainfall. या इस region पे. The average annual temperature in this region is between 23 degrees Celsius to 28 degrees Celsius temperature. Then in which region do you find a higher temperature? We find a higher temperature in the region near the equator in Brazil. Then consider the latitudinal extent of Brazil. Latitudinal extent of Brazil देखना है आपको. Where we will find temperature climate in Brazil, that is to the south of the Great Escarpment and Brazilian highland. Describe the winds blowing between 0 degree to 5 degree south zone. यहाँ पे आपको you have to describe the winds which are blowing in the southwest and northeast zone. See, the winds blowing between 0 degree to 5 degree north zone will blow from the northeast toward the equator. Equator की तरफ जाते हैं क्योंकि लो प्रेशर बेल्ट है यहाँ पे. Northeast toward the equator. On the other hand, the winds that are blowing वो southeast toward the equator, southeast से जाते हैं. Which method has been used to show distribution of this map? इसमें कौन सी मेथड यूज की है? आइसोफ्लेट मेथड, यानी लाइंस है देखो यहाँ पे. आइसोफ्लेट मेथड इज यूज्ड. देन क्लोरोफ्लेट मेथड आपको इसमें दिखती है. सो दिस इज अबाउट द ब्राज़ील. नाउ सी ऑब्जर्व इंडियाज मैप. ये भी देखो. विच रीजन गेट्स मोर देन 4000 मिलीमीटर इन फॉर साउदर्न पार्ट एंड वेस्टर्न कोस्टल रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन. यहाँ पे आपको 4000 मिलीमीटर से ज़्यादा मिलता है पानी. देन आइडेंटिफाई द रीजन विथ मैक्सिमम एंड मिनिमम रेनफॉल. द डेजर्ट इन राजस्थान एंड द पेनिनसुला रीजन आर द रीजन्स ऑफ मैक्सिमम रेनफॉल, एंड द हिमालयन रीजन इन द नॉर्थ आर द रीजन्स ऑफ मिनिमम टेम्परेचर. हिमालयन रीजन इन द नॉर्थ टेम्परेचर मिनिमम होता है यहाँ पे, कभी कहाँ पे तो -डिग्री है. इन विच डायरेक्शन इज द टेम्परेचर इंक्रीजेस? द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग इन द साउथ. यहाँ पे टेम्परेचर साउथ में इंक्रीज क्यों है? क्योंकि ये जो नीचे का पार्ट है इंदिरा पॉइंट या फिर साउथ का पॉइंट, तो ये इक्वेटर के पास है. थोड़ा सा आई थिंक 7-6 डिग्री सेल्सियस आता है. देन आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ विंड शोइंग व्हाट आर द दे नोन. मानसून विंड्स बोलते हैं आप इसको, एंड उनकी डायरेक्शन पूछिए. साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इनकी. दिस विंड्स आर नोन टू द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स. विच विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल इन इंडिया? साउथ वेस्ट मानसून winds are responsible for the rainfall in India. Then some parts of Rajasthan is under desert. What could be the reason for it? It's very important. Some part of Rajasthan is under desert, and the reason for it is as follows. The Aravalli ranges is spread in the southwest northeast range. In the central part of Rajasthan, the Aravalli range obstruct the southwest winds. As it is effect, these winds flow to the north along with the Aravalli ranges. यानी जो बारिश यानी विंड्स आते हैं वो अरावली रेंजेस को ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं. ये देखो आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं. दिस रिजल्ट इज मोर रेनफॉल टू द विंडवर्ड साइड ऑफ द अरावली रेंजेस. ओरोग्राफिक टाइप का रेम.
When these winds cross the mountain top, then they are dry, and opposite side में रेन shadow एरिया होता है. लीवर्ड साइड में आपको रेनफॉल लेस दिखाई देता है. So therefore some part of Rajasthan, that is northwest part of Rajasthan, is under desert. So draw the main parallel of latitude passing through the India which affect its climate. ये देखो फिगर 2.1 में the tropic of Cancer passes through India affecting its climate. In which part of the peninsula India are semi-arid climate conditions found and why? Semi-arid climate conditions are found to the east of the Western Ghat. This region is rain shadow area. Therefore, semi-arid climate conditions are found here. So, these are the effects. Then study the graph. ये graph reading भी आता है. ये दो इसका ग्राफ है मेनास वगैरह सिटी. In which month of the higher temperature मेनास in the city the higher temperature is found. ये आंसर्स भी लिखना है आपको. Then Belem in this city the highest temperature in the month from June to September. Then Porto Alegre in this city the highest temperature is found. Every city में. Then in the month of January to February. Then Rio de Janeiro in this city the highest temperature is found in the month of February. चारों cities का. Then in which month does it rain the most in the given cities? चारों cities में कहाँ पे पड़ता है? Then मेनास में अगर आप बोलोगे तो मार्च में होता है ज़्यादा रेनफॉल, बेलम में मार्च में, देन पोर्टो एलेग्रे में अगस्त एंड सितंबर में, एंड रियो डी जानेरो में आपको रेनफॉल जनवरी एंड मार्च में दिखाई देता है. देखो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में भी है ये. देन व्हेन डज ब्राज़ील हैव इट्स रेनी सीजन? Brazil has its rainy season from September to November as well as from March to May. Which cities has the maximum range of temperature? How much is it? कौन सी cities में maximum temperature है? Minas has the maximum range of temperature and it is nearly from 23 degree to 33 degree Celsius. What type of climate will be found in Rio de Janeiro? ह्यूमिड एंड मॉडरेट टाइप क्लाइमेट विल बी फाउंड इन रियो डी जानेरो, जैसे मुंबई में होता है वैसे. हियर अगेन ब्राज़ील का इंफॉर्मेशन है. ये देखो, बिकॉज ऑफ वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट वास्ट है, इट एक्सपीरियंस वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट वेरिएशन. फॉर एग्जाम्पल नियर इक्वेटर इट इज हॉट वाइल टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. Brazil gets rainfall from the southeast trade winds and the northeast trade winds. Northwest trade winds and southwest trade winds से आता है. Parts of Brazilian highland and extended up to northern part. The escarpment act as the obstruction to the winds coming from the sea. Escarpment ऐसे होते हैं देखो. And causes orographic type of rainfall. यहाँ पे कैसे rainfall होता है? Orography. And beyond the highland, the effect of these winds get reduces. Opposite side में रेन शेडो एरिया होता है, वहाँ पे पानी होता है लेकिन कम होता है. ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल होता है. देखो, दिस रीजन इज कॉल्ड ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल. इस लेसन का ये गिव रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है. ये देखो ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल मैप फिलअप में आता है. वाइल द टेम्परेचर इन द साउथ ईस्ट पार्ट आर कंपैरेटिवली लो. सीजनल वेरिएशंस आर फाउंड इन दिस टाइप. Then near the equator of Brazilian coast, temperature does not vary. Vary means fluctual it is. In the coastal region near the equator in Brazil, difference in temperature are negligible. Means ज़्यादा difference नहीं होता है. The winds move in the vertical direction. Winds is weak here. Vertical direction में. As a result, cyclones are not found in Brazil. That is why tropical cyclones rarely visit the coast of Brazil. Most of the part of this country lies in the tropical zone. The equator passes through the northern part of the country. ये देखो आपको पता है. The temperature is more in this region. The average temperature in the Amazon Valley is 25 degree to 28 degree Celsius. The climate is cooler in the highland. Highland में climate कैसे होता है? Cooler. Because of the proximity means closeness.
नज़दीक है सी, द कोस्ट एक्सपीरियंस mild and humid climate. Then Amazon Valley receives 2000 millimeter rainfall, while the northeast coast receives 1000 to 1200 millimeter rainfall. Now ये भी एक क्वेश्चन से आपके बुक में देखो, कंसिडर द वेरिएशन फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्राजीलियन क्लाइमेट, कंप्लीट द एडजॉइनिंग टेबल. ये आपको टेबल जो है वो कंप्लीट करना है. देखो अमेजोन वैली में क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड है, हाईलैंड में टेम्परेट है, पंतनाल वेटलैंड है, वहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट. देन नॉर्दर्न कोस्टल रीजन में ट्रॉपिकल है, साउदर्न कोस्टल रीजन में टेम्परेट है, एंड साउथ मोस्ट रीजन ऑफ ब्राज़ील में ह्यूमिड एंड सब ट्रॉपिकल है. देन कैन यू टेल के क्वेश्चन देखो. ये देखो, स्टडी द ग्राफ. अभी अपने इंडिया के देखो चारों सिटीज, दिल्ली, चेन्नई. व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड इन द रेनी सीजन इन चेन्नई एंड अदर सिटीज, एंड व्हाट इज द रीजन. चेन्नई का अदर सिटीज के देखो, मोस्ट ऑफ द रीजन इन इंडिया रिसीव्स रेन फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून विंड्स. Most of the region of India receives the rainfall nearly for the months that is June to September. The southern part of India receives rains from the winds as well as northeast monsoon winds. Then Chennai is located in the southern part of India. So Chennai receives rain for nearly 7 to 8 months. This is the reason. It rains in Chennai from May to December. What similarity do you find in the temperature curved in Delhi and Kolkata? में क्या similarities दिखाई देती है आपको? The following similarities can be seen कोलकाता and Delhi में. For both the cities, the height of the temperature curves is from the month of January to month May में है. For the both cities, the height of the temperature curves decreases. Decrease होता है same August नवंबर में. Then calculate the average range of maximum and minimum temperature in 4 cities. चारों cities का maximum and minimum temperature अगर आप दिल्ली का देखोगे तो maximum and minimum temperature is 6 डिग्री सेल्सियस टू 41. ये कैसे कहता है, सबसे कम और सबसे ज़्यादा. कोलकाता का आप मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर देखोगे तो सबसे कम टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा 37 डिग्री सेल्सियस. देन मुंबई का सबसे कम एंड सबसे ज़्यादा अगर आप टेम्परेचर देखोगे वो एरोज देखो, 16 डिग्री सेल्सियस टू 34 डिग्री सेल्सियस. देन चेन्नई का अगर आप देखोगे मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर तो 21 डिग्री सेल्सियस एंड 39 डिग्री सेल्सियस. So in which cities is the range minimum? What can you infer? क्या infer लगोगे? The range is minimum in Chennai. It indicates that Chennai has a equable climate. Equable climate है. In which city is range maximum? What can you infer this? The range of maximum in Delhi, it indicates that Delhi has a extreme climate. सबसे ज़्यादा. Based on the temperature and rainfall of Mumbai, comment upon it. अभी मुंबई का अगर आप कमेंट करोगे तो एवरेज रेंज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर दोनों का 16 डिग्री सेल्सियस एंड 34 डिग्री सेल्सियस है मुंबई का. द मोस्ट ऑफ the amount of rainfall here is 4050 millimeter to 7020 millimeter in the month of July. So we can calculate that the climate of Mumbai is hot and humid होता है. Then in which month does India experience highest rainfall? कौन से मंथ में होता है? मंथ ऑफ जून में. अगर चारों सिटीज़ का आप अगर देखोगे तो दीज आर क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है. That cities with equable climate, दिल्ली एंड कोलकाता, सब थोड़ा सा सेम क्लाइमेट होता है, एक्सट्रीम. देन अबाउट इंडिया का थोड़ा सा अगर आप देखोगे इंफॉर्मेशन तो आपको पता चलेगा कि इंडियाज क्लाइमेट इज मानसून टाइप. मानसून विंड से आता है. द सनरेज आर परपेंडिकुलर. इन ट्रॉपिकल कैंसर में डायरेक्ट सनरेज होते हैं इस रीजन में. Then as a result average temperature are high throughout the year. इस रीजन में ज़्यादा होता है. Also the temperature in winter the temperature drops -40 डिग्री सेल्सियस इन जम्मू एंड कश्मीर में तो बहुत बर्फ होता है, and parts of mountainous region in Himalaya. So I hope you understood this lesson.
रीड करना है, क्वेश्चन आंसर लिखना है। गुड लक।